Okay, so let's start with chapter 44, why you are either the solution or the problem. Okay, तो इसका बेसिक हम लोग पहले देखते हैं. तो you are on a glacier with two climbers. The first slips and falls into a crevasse. This is another thing. बीच के जगह पे गिर गया. Okay, he might survive if you call for help क्योंकि अभी वो अटका हुआ होगा. But you don't and he perishes. The second climber you actively push into the ravine. ravine क्या होता है? डायरेक्ट क्लिफ से गिरा दिया ऐसा इस टाइप का. ठीक है. And he dies shortly afterward, which weighs more heavily on your conscience. ठीक है. तो अब considering the options rationally, it's obvious that both are equally reprehensible, resulting as they do in death for your companions, and yet something makes us rate the first option, the passive option, as less horrible. The first option जो crevasse से गिरा था, it is less horrible. The feeling is called omission bias. It crops up where both action and inaction lead to cruel consequences. In such cases, we tend to prefer inaction. Its results seem more anodyne. Okay, suppose you are head of the Federal Drug Administration. You must decide whether or not to approve a drug for the terminally ill. The pills can have fatal side effects. They kill 20% of patients on the spot, but save the lives of the other 80% with a short period of time. What do you decide? हम लोग डिसाइड ये लोग क्या डिसाइड करेंगे? मोस्ट वुड विथहोल्ड अप्रूवल. ये लोग अगर 20% लोग सेव हो रहा है, 20% लोग मर रहा है, 80% सेव हो रहा है, तब भी अप्रूवल रुक जाएगा. क्यों? टू देम वेविंग थ्रू अ ड्रग दैट takes out every fifth person is worse act than failing to administer the cure to other 80%. ठीक है. उनके लिए क्या है? वेविंग थ्रू मतलब 80% को क्योर करना, बट 20% डाई कर रहा है, मतलब वन इन फाइव डाई कर रहा है, पाँच में से एक जन मरेगा. ठीक है, चार से वो एक मरेगा, बट स्टिल वो लोग क्योर नहीं देगा. It is an absurd decision and a perfect example of omission bias. Suppose that you are aware of the bias and decide to approve the drug in the name of reason and decency. Bravo. But what happens when the first patient dies? A media storm endures and soon you find yourself out of a job. As a civil servant or politician, you would do well to take the ubiquitous omission bias seriously and even foster it. ठीक है. सिविल सर्वेंट या पॉलिटिशियन जो यू वुड डू वेल taking the ubiquitous omission bias seriously and even foster it. ठीक है. What is the meaning of this? Let's ask Copilot. I think I would have written somewhere. Not able to find it. Explain the following text. Understand the content book you have currently. The meaning, the term it's present everywhere and found all around us. Okay. When he uses, he is usually pointing out that certain biases, illusions, or illusions taking in thinking are not rare quirks, but rather widespread tendencies that almost everyone experiences. ठीक है. Okay. Signals that mental error being discussed is universal, deeply ingrained, and constantly influencing our judgments. Okay, so you would right. As a civil servant or politician, you would do well to take ubiquitous omission bias seriously and even foster it. Case law shows how ingrained such moral distortion is in our society. Active in euthanasia, even if it is an explicit wish of dying, it is punishable by law. किसी को मरने का विश है एक्टिवली, इसको उसका टर्म है ये, तो पनिशेबल बाय लॉ है. ठीक है. एक्टिवली कोई मरना चाहता है वो भी पनिशेबल वाला है. वेयर डेलिबरेट रिफ्यूजल ऑफ लाइफ सेविंग मेजर्स इज लीगल. फॉर एग्जांपल फॉलोइंग सो कॉल्ड डीएनआर ऑर्डर्स. डू नॉट resuscitate. ठीक है. Such thinking also explains why parents feel it is perfectly acceptable not to vaccinate their children, even though it is discriminably reduces the risk of catching the disease. Of course, there is also a very small risk of getting sick from the vaccine. Overall, however, vaccine makes sense. Vaccination protects not only children but society too. A person who is immune to the disease will never infect others objectively. If non-vaccinated children ever contracted one of this sickness, we would accuse the patients of actively harming them.
Okay, non-vaccinated children say if someone else got the sickness, we would accuse parents of actively harming them. But this is exactly the point. Deliberate inaction somehow seems to be to grave them seems less grave than a comparable action. Say if the parents intentionally infected them, तो inaction हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है action लेने से. ठीक है. The omission wise lies behind the following delusions. We wait until people shoot themselves in the foot rather than taking aim ourselves. Investors and business journalists are more lenient on companies that develop no new products. कोई new product develop नहीं कर रहा, उस पे लोग ज़्यादा मतलब rely करते हैं, those they are producing the bad ones. ठीक है, बोल जो नया प्रोडक्ट ट्राई कर रहे बैड बना रहे उनके लिए, इवन दो बोथ रोड लीड्स टू रूइन. सो बेसिकली कोई एक कुछ नहीं कर रहा है, दूसरा कुछ ट्राई कर रहा है नया बनाने का बट खराब बन गया है कुछ. इन्वेस्टर्स लोग जो कुछ नहीं कर रहा उसके पीछे जाते हैं, खराब बन गया तो उसका इमेज गिर गया है तो इसीलिए लोग उसके पीछे नहीं जाते. ठीक है, बट अगर कोई कुछ नहीं कर रहा तो भी वो बाद में जाके गिरेगा ही, और जो कर रहा है जिसके खराब बन रहा है वो हो सकता है बाद में जाके या तो अच्छा करे या फिर वो और गिर जाए. तो सिटिंग पैसिवली ऑन अ बंच ऑफ मिजरेबल शेयर्स फील्स बेटर देन एक्टिवली बाइंग बैड वंस. ठीक है. Building no emission filter into a coal plant feels superior to remove one of the cost reasons. कोल प्लांट में फिल्टर नहीं लगाना था, कोई कॉस्ट लग जाएगा. फेलियर टू इंसुलेट योर हाउस इज मोर एक्सेप्टेबल देन बर्निंग द स्पेयर्ड फ्यूल फॉर योर ओन अम्यूजमेंट. ठीक है, इंसुलेट नहीं करते हम लोग हाउस को. फिर नेग्लेक्टिंग टू डिक्लेयर इनकम टैक्स इज लेस नॉर्मल, लेस इमोरल देन फेकिंग टैक्स डॉक्यूमेंट इवन दो द स्टेट लूजेज आउट आइदर वे. दोनों चीज़ें टैक्स नहीं पे कर रहे तो. फिर इन द प्रीवियस चैप्टर वी मेट द एक्शन बायस. इट इज द अपोजिट ऑफ ओमिशन बायस, नॉट क्वाइट. द एक्शन बायस causes us to offset a lack of clarity with futile hyperactivity and comes into play when a situation is fuzzy, muddy or contradictory. The omission bias on the other hand usually abounds where the situation is intelligible. A future misfortune might be averted with direct action, but this insight doesn't motivate us as much as it should. The omission bias is very difficult to detect. After all, action is more noticeable than inaction. In the 1960s, student movement coined a punchy slogan to condemn it. If you are not part of the solution, you are part of the problem. अगर आप solution के लिए कुछ नहीं कर रहे तो आप problem के part हो. तो ये देखो इसका हेडिंग भी वही है. अब इसका समरी रीड करते फट से, तो इससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा. एक बार चैप्टर का रॉ रीडिंग हो चुका है, ये समरी बनाया मैंने. तो चैप्टर 44 एक्सप्लेन द ओमिशन बायस विच हैव टेंडेंसी टू जज हार्मफुल एक्शंस एज मच वर्स देन इक्वली हार्मफुल इनएक्शंस. हार्मफुल जो एक्शन कर रहे हैं उसको हम लोग ज़्यादा खराब मानते हैं देन इक्वली हार्मफुल इनएक्शन. हाँ, इनएक्शन भी हार्मफुल है बट हार्मफुल एक्शन को हम लोग ज़्यादा वो देते हैं, वेटेज देते हैं देन इक्वली हार्मफुल इनएक्शन. व्हेन फेस्ड विद अ सिचुएशन वेयर बोथ एक्शन एंड इनएक्शन लीड टू क्रूअल consequences, our brains naturally prefer to do nothing because the results of being passive feel less horrible than our conscience. To illustrate this, the author asks, imagine being on a glacier with two other climbers. If you actively push one into a crevasse, he dies. If the second climber slips and falls in, you simply decide not to call for help. He also dies. Objectively, both choices are equally reprehensible, lead to exact same outcome, but the passive option of simply omitting the rescue call feels far less evil to us. The mental glitch explains why people in charge often prefer to let bad things happen rather than take an active risk to fix them. For example, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल था कि FDA हैड अप्रूव्ड अ ड्रग टर्मिनली इल वाला 80% लाइफ उससे बचेगा बट 20% विल गेट किल्ड. तब भी मोस्ट पीपल वुड withhold approval. To our brains, actively approving a drug that kills 1 in 5 people feel much worse than passively standing by 80% of them die from illness. The same bias explains why some parents refuse to vaccinate their children. They fear the minuscule active risk of vaccine much worse than massive passive risk of leaving their children exposed to acute disease. ठीक है, बहुत लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते. द की लर्निंग फ्रॉम चैप्टर का क्या है, चैप्टर का की लर्निंग क्या है? इन एक्शन कैन बी जस्ट एज बैड एज एक्शन. You must recognize that when you have the power to avert a disaster, choosing to do nothing is morally and objectively just as bad as actively causing the harm. Omission bias versus action bias. While the action bias पिछले चैप्टर में ही हम लोग पढ़े थे, compels us to do useless things when a situation is confusing or unclear. The omission bias kicks in when a situation is perfectly clear. Even when we know exactly how to prevent a misfortune, the omission bias tricks us into thinking that remaining passive is the safer or more acceptable route.
Take responsibility because doing nothing leaves no visible trace. The omission bias is very difficult to detect. To combat it, author recommends adopting the famous slogan coined by 1960 student movement: "If you are not part of the solution, you are part of the problem." इस समरी को हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे. थैंक यू वेरी मच. तो चैप्टर का नाम ही यही था, चैप्टर 44, वाई यू आर आइदर द सॉल्यूशन और द प्रॉब्लम. ठीक है. ये चैप्टर 43 था. इसका की लर्निंग्स क्या था? एक्शन डज नॉट इक्वल प्रोग्रेस, रेजिस्ट द अर्ज टू रिएक्ट इमीडिएटली, एम्ब्रेस स्टिलनेस. ठीक है. ये था 43 का की लर्निंग्स. ये 44 का इफ यू आर आइदर सॉल्यूशन, वाई यू आर आइदर द सॉल्यूशन और द प्रॉब्लम, ओमिशन बायस. थैंक यू.